morning students. Today we are starting with chapter 9, question number 3. Question 3 is given, add the following. These three expressions are given, AB minus BC, BC minus CA and CA minus AB. Add these expressions. Yes, while we add or subtract two or more expressions, then we add and subtract only like terms. Like terms are terms having same literal factor. So add these expressions. Now there are two methods of addition. First you can do column method and row method. Column method is this, first plus second, as you have done in earlier classes. Now we will do this row method. Okay. So row method is first expression plus second, or if there are more expressions are given. So we are using row method. The first expression AB minus BC plus second expression BC minus CA. Then third expression plus CA minus A. Now add or subtract like terms. Like terms, see this first term is AB. Factors of AB is A into B. What is like term to AB? This AB and this minus AB, these are like terms. So if we add AB minus A, clear? Now let's see minus BC and plus BC. Next is minus CA plus CA. Now AB and AB are like terms. Okay. While we add or subtract like terms, then see that coefficient of AB is 1, and in this term coefficient of AB is minus 1. So 1 minus 1 into AB. While we subtract like terms or add like terms, then write variables as it is. We add or subtract the coefficients. The coefficient of AB in first term is 1. Coefficient of AB in second term is minus 1. So 1 minus 1, and this variables AB as it is. Now next, coefficient of this BC is minus 1, and coefficient of in next term is plus 1, and variables BC as it is. Same here, coefficient is minus 1, coefficient of CA second term is plus 1 and C, and we are adding, that's why we are using this plus sign. Now 1 minus 1 is 0 into AB, this plus sign as it is. Minus 1 plus 1 is 0, BC as it is, plus minus 1 plus 1 is 0 into C. 0 into AB is 0, 0 into BC is 0, 0 into CA is 0. So 0 plus 0 plus 0 is 0. The answer is 0. Clear? We are using row method to write all these expressions in a row, and for adding we'll use plus signs, addition, and then we'll solve like terms. Clear? Like terms having same literal factor, the variables same. Clear? Now second part. A minus B plus AB, then plus second expression is given B minus C plus BC, and third expression is given C minus A plus AC. Add. So first we'll combine like terms. See A and minus A, these are like terms. A minus A. Next is minus B plus B. The next is plus AB. Now you can see there is no like term to AB, so we write this AB as it is. This we have done. Next is
minus c, and like term is plus c. Next is bc. There is no like term to bc. This we have done. And now last is AC. So a minus a, you can do like this, 1 minus 1, or simply you can say a minus a, cancel 0, minus b plus b, cancel, minus c plus c, cancel. Now this ab, bc, ac, these all are unlike terms, we can't add these, so as it is ab plus bc plus ac. This is answer. Clear? Now fourth part, these three expressions are given, add L square plus M square, M square plus N square, N square plus N square, plus 2mn, 2mn plus 2nn. And so we will add like terms only. Now L square, like term to L square is this term, so L square plus N square. Next is M square plus M square, then N square plus N square. This 2ln, 2mn, 2nn. These all are unlike terms, so write is as it is. L square plus N square is 2L square. N square plus M square. Coefficient of this M square is 1. Coefficient of this M square is also 1. So 1 plus 1, 2. While we add only or separate coefficients. Variables will remain same. Now n square plus n square is 2n square, and these are alike. So 2ln, 2mn plus 2nn. And this is answer. Fine. Now fourth question is subtract. This is given. Subtract 4a minus 7ab plus 3b plus 12 from 12a minus 9ab plus 5b minus 3. First of all, subtract this expression from this. So we will write it as 12a minus 9ab plus 5b minus 3. And this we are using for subtraction. This sign. And now 4a minus 7ab plus 3b plus 12. Clear? Subtract first expression from second. So this, if we take this expression is first and this is second, so we'll write it as second expression minus first. क्लियर? जब भी फ्रॉम के बाद जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर मैं आपको बोलूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, so you will write 10 minus 5. तो फ्रॉम के बाद जो भी टर्म होती है उसको हम पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ so we are writing second expression minus first expression. Now in earlier classes you have done this by origin by column method. If we do this by column method, then this will be, here you will write 12a minus 9ab plus 5b minus 3. Then you will write this expression 4a minus 7ab plus 3b plus 12. And now while we subtract two expression, we change all the signs of second expression. Here this 4a is positive, it will become negative. This negative, positive, positive, negative और positive, negative. जब हम subtract करते हैं तो जो भी हमारा सेकंड वाला एक्सप्रेशन होता है, जो भी हमने नीचे लिखा होता है, सबके साइन जो वो चेंज हो जाता है. जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. अब हम करें 12a minus 4a. a तो एज इट इज, 12 minus 4 8. These variables a b as it is, minus 9 plus 7. Now 7 is plus, so minus 9 plus 7 is minus 2. The next
b variable as it is, plus 5 minus 3. Plus 5 and minus 3 is plus 2. Next minus 3 and minus 12. Minus 15. Both are negative, तो add होंगे but sign क्या होगा? Negative. ठीक है, this is answer. Now see how we solve this by row method. The second expression minus first expression. Okay. अब suppose मैं इसको solve करती हूँ. 12a minus 4a, ठीक है, 8a आ जाएगा. Minus 9ab and minus 7ab. It will be minus 16ab. But यहाँ तो हमारा क्या आया था? Minus 2ab. That means ये गलत है. तो जब भी हम रो मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम एक ब्रैकेट यूज करते हैं. सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन. दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई हैव शोन दिस. इफ यू सॉल्व बाय कॉलम मेथड देन वी चेंज द साइन. अब यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाई तो साइन तो चेंज नहीं होंगे, तब तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो जब भी हम दो एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड ये जो है हमारा लास्ट एक्सप्रेशन, इससे पहले हमने माइनस साइन के साथ ब्रैकेट जरूर लगानी, अदरवाइज ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा. सो वी राइट दिस एज सेकंड एक्सप्रेशन माइनस ब्रैकेट फर्स्ट एक्सप्रेशन. एंड नाउ विल रिमूव दिस ब्रैकेट. ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई. ब्रैकेट जो है वो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन साइन के लिए यूज करते हैं. नाउ राइट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज. 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3. ये हमने एज इट इज लिखा. अब ये हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे. ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. मैं कैसे लिख सकती हूँ? माइनस 1 इंटू दिस. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो देखो ये 4a पॉजिटिव है, इसको अगर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस 4 हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म के साथ अगर करें ये माइनस 7 है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ 7 1 7, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. In short, you can say while we are removing this bracket, signs will change. Positive जो है वो negative हो जाएगा, negative जो है वो positive हो जाएगा. Next positive था, ये क्या हो जाएगा? minus 3b. ये negative था, ये क्या हो जाएगा? positive. ये positive था तो ये negative. Clear? Now we can solve like terms. Clear? While we are subtracting, then पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो फ्रॉम के बाद वाला जो हम पहले लिखेंगे, और हम रो मेथड जब यूज कर रहे हैं तो हमें माइनस साइन के साथ इस यहाँ पे ब्रैकेट जरूर यूज करनी है. बिकॉज अगर हम ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे. साइन चेंज नहीं होगी तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा. हम हर जगह इस कॉलम मेथड में भी तो हम साइन चेंज कर रहे थे, तो सेम वही साइन चेंज करने के लिए हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं. और फिर नेक्स्ट स्टेप ये जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज. यहाँ ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे. साइन चेंज होने का मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ 12a, नाउ सॉल्व लाइक टर्म्स. 12a एंड माइनस 4b. 12a माइनस 4a लाइक टर्म्स को कंबाइन किया हमने. नेक्स्ट इज माइनस 9ab और 9ab और कौन सी टर्म है जिसमें ab फैक्टर्स हैं? प्लस 7ab. The next है प्लस 5b और माइनस 3b. प्लस 5b और माइनस 3b. नेक्स्ट इज माइनस 3 एंड माइनस 12. कॉन्स्टेंट टर्म्स है. नाउ सॉल्व. 12a minus 4a is 8b. Variable as it is 12 minus 4 8. In next variable ab as it is minus 9 plus 7 is minus 2. The next variable b as it is plus 5 minus 3 is plus 2. Minus 3 minus 12 is minus 15. This is answer. You can check either you are using row method or column method, answer is same. But if you don't use this bracket then your answer will be wrong. Okay. Now see third part. Now C part is given. Subtract 4p square cube minus 3p cube plus 5p cube square minus 8p plus 7q minus 10 from
this 18 minus 3p minus 11q 5 plus 5pq minus 2pq square plus 5p square. तो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन था उसको हमने पहले लिखा, हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन माइनस फर्स्ट, और सेपरेट करें तो हमने ये ब्रैकेट यूज की. ब्रैकेट यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू फॉरगेट दिस देन योर होल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. Now in next step we will remove this bracket. Write this first expression as it is. 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q. अब हम ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं. ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये साइन, ये माइनस साइन है. If we multiply this, 4 is positive. After removing this bracket, it will be negative. तो ये होगा minus 4p square q. Next 3 negative है तो ये हो जाएगा positive plus 3pq. Next 5 positive है, it will become negative minus 5p square. ये negative negative positive, ये positive है, ये negative, और ये negative जो है वो positive. ठीक है, ये था. इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करो फ्रॉम दिस. तो ये हमने पहले लिखा, ये बाद में लिखा. सेपरेट कर रहे हैं, दैट मींस हमने ब्रैकेट यूज की. एंड नाउ वी आर रिमूविंग दिस ब्रैकेट. तो साइंस विल चेंज, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू नेगेटिव. नाउ सॉल्व लाइक टर्म्स. फर्स्ट इज गिवन 18. 18 is constant term, and now another constant term is plus 10. So 18 minus is plus 10. 18 plus 10. Next is minus 3p. Minus 3p. Next term है p, जिसमें p वेरिएबल है, that is plus 8p. Next is minus 11q. Next term for q is minus 7q. So minus 11q minus 7q. Next is plus 5pq. Plus 5pq, और इसके लाइक टर्म है प्लस 3pq. हो गया. नेक्स्ट इज माइनस 2pq square. pq square. See this is p square q. These are not like where p is one time and this p is two time. pq square. This term pq square minus 5pq square भी हो गई. नेक्स्ट इज प्लस 5p square q. p square q. In this also variables are p square q. So this is like term 2. 5p square q. Done. Now 18 plus 10 is 28. Minus 3p plus 8p. Variable p as it is minus 3 plus 8 is plus 5. Next q variable as it is minus 11 and minus 7, minus 18. pq variables as it is plus 5 and plus 3, plus 8. In next variables literal factors are pq square as it is minus 2 and minus 5, minus 7. And now next p square q plus 5 and minus 4. Plus 5 minus 4 is plus 1, or you can simply write p square q. So this is answer. Fine. Now exercise 9.2. In 9.2 we will study product of algebraic expression. You have done addition and subtraction in last year and previous exercise also. Now this is new for you. Multiplication of an expression with another expression, or you can say product of algebraic expression. Okay. For example, if we are given 2x and 5x, multiply these two expressions or find the product of these expressions. Okay. So how we will multiply? While we multiply two expressions, then we will multiply numerical factor to numerical factor. 2 into 5 and x into x. So 2 into 5, 10. And x into x is multiplied by itself 2 times. So x into x is x square.
This is answer. ठीक है. Take one more example. If it is given 25y into 2x. Find the product. Okay. So multiply numerical factor to numerical factor. 25 into 2, and then y into x. 25 2s are 50. Y into x. Yx, these are unlike terms, so we'll write as it is. Xy, you can say yx. Yes, x into y is equal to y into x. Same factors है. xy को मल्टीप्लाई करोगे xy, yx को करोगे, ये दोनों सेम होंगे. जैसे हम लिखे 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2, आना तो दोनों का 6 ही है. So if it is written 2xy or 5yx, these are like terms because have same literal factor. Fine. So we are starting. First question: find the product of the following pairs of monomial. Now exercise 9.2. First question is find the product of following pairs of monomials. Monomials expression with one term. So these two monomials are given 4 and 7p. Find the product. So product is 4 into 7p. Now multiply numerical factor to numerical factor. 4 into 7, 28, and this p as it is. Next is minus 4p into 7p. 7 4s are 28. 7 is positive. The 7 is positive and 4 is negative. If we multiply negative and positive number, the negative positive, negative. And now p and p, p into p, p is multiplied by itself 2 times, so it will be p square. Next, minus 4p into 7 pq. 4 7s are 28. 7 is positive, 4 is negative. Negative, positive, negative. P into p, p is multiplied by itself 2 times, p square. And q, in this term there is no q. Q is only one time, so write as it is. Next, 4pq into minus 3p. And yes, here we are using bracket. Why we are using bracket? Because we can't use two signs together. So if I write this 4p cube into minus 3p, what does it mean? माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, पता ही नहीं चल रहा. तो जब भी दो साइन हमारे एक साथ आए तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं. ये हमारी फर्स्ट टर्म है इनटू सेकंड टर्म. 4 into 3 12. 4 positive, 3 negative. Positive, negative, negative. P cube into p. P cube means p is multiplied by 3 times, and one more time p3 into p क्या हो गया, p raised to power 4. Next is 4p into 0. Something multiplied with 0. 4 into 0, 0. If we write p as it is, because here no p, 0 into p is 0. So the answer is 0. Any number multiplied with 0 is 0. So today's your homework is exercise 9.1 third and fourth question and 9.2 first question. Tick.